Hello students, so today we are going to discuss about the topic animal husbandry. Now what is animal husbandry? Animal husbandry is the rearing, feeding and feeding of animals or livestock. Means here we are going to talk about the feeding of animals, how they are going to rear, उनको पालन पोषण कैसे होता है और उनको ब्रीड कैसे करते हैं so that they can multiply. ठीक है? So this when we talk about all the three, we can call it as the scientific management also. Scientific management of animals is also known as animal husbandry. You know very well about mixed farming. Nowadays mixed farming is very common. Mixed farming includes crop production as well as animal rearing because people have really raised their standards. So animal food is also much in demand. So to overcome that demand, nowadays people are also included, or you can say they are also involved in animal husbandry business, and it is very much profitable, good income, as well as it is a very important because it provides us a lot of food products like honey, milk, meat, eggs, etc. So now let us discuss more about it. So first of all we are going to discuss about cattle farming. तो जब cattle farming होती है, so it's basically having two different types of animals, like because cattle farming is basically involved with cows and buffaloes. So milch animals and draught animals. It is categorized into two depending upon the things they are providing. Milch animals are those females which provide us milk. It can be female cow or female buffalo. Okay? So they provide milk. And draught are those males generally which do not provide milk. So they can be used as a farm labor, जिनको खेत में लोग इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है? So they are called as draught also. DRAEGHT, little different spelling, ठीक है? And the scientific name of cow and buffalo is cow is known as Bos indicus, while buffalo is known as Bos bubalis. Now there are two main varieties in this particular category. We are having indigenous variety also as well as exotic variety. क्योंकि जो मिल्च एनिमल्स होते हैं, जो काउस या बफलोस होती हैं, जब उनका लैक्टेशन पीरियड अच्छा होता है. व्हाट इज लैक्टेशन पीरियड? लैक्टेशन पीरियड इज द पीरियड इन व्हिच these cows and buffaloes they provide milk. तो जितना ज्यादा अच्छा लैक्टेशन पीरियड होगा, the long time they give milk, they provide milk, the longer they are used. So based on these, indigenous varieties are also very much in use as well as exotic. इंडिजिनस को हम अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं देसी, जो हमारी लोकल ब्रीड्स है, उसमें आ जाती है रेड सिंधी एंड सेटिवान. और जो हमारी एक्सोटिक ब्रीड है, जो फॉरेन ब्रीड है हमारी, दैट इज जर्सी एंड ब्राउन स्विस. दीज आर वेरी कॉमन ब्रीड्स व्हिच आर यूज्ड कॉमनली. सो यू नो इंडिजिनस ब्रीड इज वेरी मच रेजिस्टेंट टू डिजीजेस. ये सबसे अच्छी बात है कि ये जो हमारी इंडियन वैरायटी है ये बहुत ज्यादा रेजिस्टेंट होती है डिजीजेस के लिए. एज वेल एज एक्सोटिक ब्रीड की ये खासियत होती है. व्हाई दे आर यूज्ड? बिकॉज दे आर गुड लैक्टेशन पीरियड. ये ज्यादा लंबे समय तक मिल्क प्रोवाइड करते हैं. एंड बिकॉज ऑफ दिस, और समटाइम्स व्हाट हैपेंस, बिकॉज दे आर हैविंग इंडिविजुअल इंपॉर्टेंस, दोनों की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, तो कई बार इनको क्रॉस ब्रीड करा के हमें कॉम्बिनेशंस भी अच्छे मिलते हैं, जिससे हमें गुड लैक्टेशन भी मिलता है, पीरियड भी मिलता है. सेकेंडली हमें रेजिस्टेंट टू डिजीजेस भी मिलता है. तो हम इन्हें कई बार क्रॉस ब्रीड भी कराते हैं. अदर देन दैट, जब हम इस फील्ड के बारे में, जब हम कैटल फार्मिंग करते हैं, सो वी हैव टू बी वेरी मच केयरफुल रिगार्डिंग द केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ दीज एनिमल्स, काउज एंड बफेलोस. कि उनकी फूड हैबिट्स, जो उनका फूड है वो किस तरीके का होना चाहिए. बेसिकली दो तरीके की चीजें होती है. उनका एक मेंटेनेंस बेस्ड फूड होना चाहिए, दूसरा उनका मिल्क प्रोडक्शन, क्योंकि दोनों जो है साइमल्टेनियसली रहते हैं. तो मेंटेनेंस के लिए और मिल्क प्रोडक्शन के लिए दे शुड बी हैविंग रफिश डाइट ऑल्सो, रफिश बेस्ड डाइट एज वेल एज प्रोटीन बेस्ड डाइट. तो जो रफिश बेस्ड डाइट होती है उसमें दे आर रिच इन फाइबर्स. उनको ज्यादा इस तरह का फूड देते हैं जो फाइबर बेस्ड. और एज यू नो वेरी वेल दैट रफिश इज रियली वेरी गुड टू कीप देम फिट एंड फाइन. एंड सेकेंडली जो कंसंट्रेट्स यानी कि जो वो फूड होता है विच इज बेसिकली नॉट वेरी मच रिच इन फाइबर बट दैट इज बेसिकली रिच इन प्रोटीन. So that is protein rich diet. So that they provide us more and more milk. They will be fit and healthy. उसके अलावा जो फार्मिंग करते हैं, कैटल फार्मिंग करते हैं, वो उनकी शेड जहाँ where they live, that has to be very much clean,
well ventilated, proper aeration should be there. It should have a sloped area. वहाँ पे हमेशा slope होना चाहिए ताकि जब हम उनको clean करते हैं या वो जब urinate करते हैं, that time water should not stay there. That place should always remain dry and clean. And one more important thing is that they should be properly vaccinated also. Properly cleaning के साथ साथ sanitation और hygiene के साथ साथ उनका vaccination बहुत जरूरी है. Otherwise these animals can be the victim of